Hello students, welcome to Saurabh sir classes. This is the question from GATE 2026, question number 31, न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन दिया गया है, उसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, फिर उसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो गिवन इंटीग्रेशन इज अल्फा इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to 1 n square plus sine e to the power x to the power n by 7n square plus x to the power 8 dx। as this is the continuous function, so हम लोग लिमिट को और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वी कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n square plus sine e to the power x to the power n by 7n square plus x to the power 8 dx। Now, given range of the integration is 0 less than equals to x less than equals to 1. So as exponential is a increasing function, so as 0 less than equals to x less than equals to 1, we can write e to the power 0 less than e to the power x less than equals to e to the power 1, which implies 0 not, e to the power 0 means 1 less than equals to e to the power x less than equals to e। Okay, so अब साइन e टू द पावर x का हम लोग को रेंज निकालना पड़ेगा। सो साइन e टू द पावर x क्या होगा? लुक, e टू द पावर x इज, हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से इजी होगा। सो e टू द पावर x इज लाइज बिटवीन 1 and e is just between 2 and 3, so this is e। okay, so e to the power x is the variable lies between 1 and e। okay, अब देखिए साइन ग्राफ कैसा होता है। साइन पाई बाई 2 पे 1 देता है, पाई बाई 2 इज लेस देन 2, दैट मीन्स सपोज यहाँ पर पाई बाई 2 है, और साइन फिर से 0 कहाँ पर देता है, 0 के बाद फिर से 0 देता है पाई पे। सो पाई इज 3.14 मीन्स जस्ट ग्रेटर देन 3, सो दिस इज पाई बाई 2। सो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, सो ग्राफ लुक लाइक दिस। okay, the rough graph, so this is 1। so अगर वेरिएबल का रेंज 1 से ई के अंदर है, सो साइन का वैल्यू अगर नोटिस करेंगे, सो साइन का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द पोर्शन ऑफ द साइन फॉर द e to the power x lies between 1 to e। so sin e to the power x is greater than 0 less than equals to 1, and it will take value 1 only when e to the power x equals to pi by 2। so in the entire interval, in entire range, in this entire range, sin e to the power x is strictly greater than 0 and less than equals to 1। so sin e to the power x to the power n is a very small number। okay, so it's very small number, so that's why this is tends to 0 as n tends to infinity। we just neglecting for the 1 point to the power x pi by 2, otherwise it is a very small value, ये बहुत छोटा वैल्यू है। दैट्स वाई इसका पावर अगर n हम लेंगे, उसके बाद n को अगर इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, तो ये साइन e टू द पावर x टू द पावर n हमेशा ही 0 के दिख टेंड्स करेगा। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, तो हम लोग देखेंगे। सो देयरफॉर द इंटीग्रेशन अल्फा इज 0 to 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम लोग इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, दो पोर्शन में अगर डिवाइड करें तो है n स्क्वायर साइन टू द पावर एक्स एन। ओके, सो n स्क्वायर बाई 7n स्क्वायर प्लस x टू द पावर 8 प्लस साइन e to the power x to the power n by 7n square plus x to the power 8 dx।
Okay, now, okay, so from this alpha equals to 0 to 1, limit n tends to infinity, n square by 7n square plus x to the power 8 plus limit n tends to infinity sine e to the power x to the power n by 7n square plus x to the power 8. Okay, this is dx. Now, as x lies between 0 to 1, so x to the power 8 is also lies between 0 to 1. So this is a bounded number एंड लिमिट n टेंस टू नीचे में 7n स्क्वायर है, और हम लोग देखें कि साइन e टू द पावर x का वैल्यू 0 से 1 तक लाई करता है. तो जब साइन e टू द पावर x टू द पावर n और यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी बहुत छोटा नंबर है. सो दैट्स वाई दिस पोर्शन, दैट मीन्स this portion alpha, हम लोग थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, अल्फा इज 0 to 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. और इस पोर्शन के लिए हम ऊपर नीचे n स्क्वायर्स के डिवाइड कर दे. दिस पोर्शन हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं. इसको अगर n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 7 प्लस x टू द पावर 8 बाई n स्क्वायर प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं, एज वी डिस्कस अर्लियर कि ये वैल्यू बहुत छोटा वैल्यू होगा बिकॉज ऊपर में साइन e टू द पावर x टू द पावर n, ये भी बहुत छोटा वैल्यू है. और नीचे में 7n स्क्वायर प्लस x टू द पावर 8 छोटा, एंड ये बाउंडेड वैल्यू है, बाउंडेड. और नीचे में 7n स्क्वायर प्लस x टू द पावर 8, x टू द पावर 8 भी बाउंडेड है. तो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो डिनोमिनेटर टेंस टू इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई दिस पोर्शन गिव्स 0. So this is dx. Now 0 to 1 x to the power 8 by n square, x to the power 8 is bounded, we already say. तो इसको अगर n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो दिस पोर्शन becomes 0. So we get 1 plus of 7 plus of 0 into dx. So therefore alpha equals to 0 to 1 by 7 dx, which is 1 by 7 x 0 to 1, that means 1 by 7. बट हम लोग को बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 14 अल्फा, therefore 14 अल्फा equals to 14 into 1 by 7. So the answer is 2. So the given answer 14 alpha is 2. So this is our answer. As this is the integration of continuous function, तो हम लोग लिमिट और इंटीग्रेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द मेन स्टेप ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो द आंसर इज 2. थैंक यू.